Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the top 50 MCQs session in which we are going to cover the top 50 MCQs from the month of April 2023. And guys, this is the part 2 of the month of April 2023. So guys, अगर आज की session की बात करें, so we will be revising everything that we have covered in the past 1 week in our fast track sessions. और guys, आज का जो session है ये एक rapid fire session होने वाला है जिसके अंदर हम revision करने वाले हैं उन सभी questions की which are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. So guys, let me tell you that this session is going to be a rapid fire one. तो आप सभी को काफी ज्यादा क्विक रहना होगा in answering the questions in the comment section. But before starting the session, I have a very good news for all of you that we are providing the comprehensive guidebooks to all the aspirants of the RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. So जब हम बात करते हैं इन comprehensive guidebooks की, so these guidebooks basically provides you the definitive answers to your queries which pops up in your mind as an aspirant. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये queries जो एक mind में आ सकती हैं aspirant के. So that is basically, it can be about the exam, it can be about the body in which you are targeting to enter into, and it can be about the preparation of the exam. For example, when I talk about the Reserve Bank of India, so RBI का क्या रोल है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, so such kind of questions will be answered in this guidebook. Now when I talk about the exam, so eligibility criteria क्या है, what is the detailed syllabus, previous year cutoffs क्या थी, so everything will be provided to you in these guidebooks. Apart from that, when I talk about the preparation, so what are the sources that you must follow to clear this exam has been mentioned in this particular guidebook. So what are you waiting for? Kindly download this guidebooks from the link given in the description of this particular session. So guys, now let's get back to the session. In this session, I will be covering the 50 MCQs and this is the revision session. So this session is going to be a very rapid fire one. ठीक है, तो काफी जल्दी जल्दी से questions आएंगे आप सभी के सामने and you are required to tell me that what exactly is the right answer to these questions. And the very first question is here on your screen. So the very first question is, basically, recently a list has been published by the Central Electricity Authority under the Ministry of Power. और इस list के according you are required to tell me that which one of the following has been ranked बेस्ट परफॉर्मिंग पावर जनरेशन कंपनी इन द कंट्री. सी गाइस, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की, तो बेस्ट परफॉर्मिंग पावर जनरेशन कंपनी कौन सी थी एज पर द लिस्ट व्हिच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो हियर गाइस, द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो दैट इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, अगला क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम मार्किंग द स्टार हियर. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द फर्स्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द फिस्कल ईयर 24. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं ये बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की, तो रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है एंड एज पर द आरबीआई देयर विल बी नो चेंज इन द रेपो रेट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रेजेंट रेपो रेट व्हिच इज देयर. इज इट 6.25, 6.75%, 6.5, 6.46%? So guys, these are the questions which are really very important from the exam point of view. आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर के एग्जाम में भी प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आया था. एंड गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 6.5%. एंड हियर यू कैन सी ऑल द रेट्स व्हिच आर देयर. प्रेजेंट रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट रेट्स इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मिसिंग गिवन है और आपको मुझे ये बताना है रिजर्व रेशियोज के बारे में, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रेजेंट सीआरआर and SLR. So do tell me this particular part in the comment section of this particular video. Now guys, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की, तो इंडिया के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर conducting this monetary policy, and that organization is basically the Reserve Bank of India. So guys, under the RBI Act 1934, this particular Reserve Bank of India has been entrusted with the responsibility of conducting the monetary policy in India. अगर हम बात करते हैं इस monetary policy की, तो इसके क्या objective है? See guys, objective is basically to maintain the price stability in India while keeping in mind the objective of growth. तो growth के साथ साथ हमें price stability को भी maintain करना है. ठीक है? I hope this is clear to all of you. अगर हम बात करते हैं monetary policy committee की, तो there are 6 members in this particular committee in which the governor of the Reserve Bank of India is having the casting vote. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the next question. So guys, अगला question आपकी screen पर, the question is the Fairfax backed NBFC, that is IFL Finance, has secured $100 million in a long term funding from which of the following entities? तो इनमें से वो कौन सी entity है जिससे long term funding मिली है IFL Finance को?
and that is of $100 million. And here guys, the right answer to this particular question is both option A and C, that is Export Development Canada and Deutsche Bank. So I hope that this is clear to all of you guys. A very direct question, they do not need any kind of explanation here. Now let's move on to the next question. So here you are required to tell me the name of the bank which has tied up with the Chola Mandalam MS General Insurance. Why exactly this particular partnership has been held? That is to offer the health and general insurance products to the bank's customers, and the name of that particular bank is option C, that is South Indian Bank. Next question. So guys, next question is on the, as per the recent data, see recently a data on the direct tax collections has been released, and the question is on the same data, that is on the direct tax collections for the fiscal year 2020 to 2023. And as per this particular data, you are required to tell me that what exactly was the direct tax collections in fiscal year 2020 to 2023. So here guys, the options are given. Do let me know what is the right answer in the comment section. These are the 5 options. Just see that what exactly is the right answer as per you, and tell me the option in the comment section that is the right answer as per you. Okay, so guys, when I talk about the right answer to this particular question, the right answer is 16.61 trillion rupees. So आप देख सकते हो कि this particular collection was up by 17.63% over the value which was there in the previous financial year. So guys, this is something that you must remember from the exam point of view. Now let's move on to the next question, and the next question you are required to tell me the name of this particular entity which has entered into a partnership with the UIDAI. This is the Unique Identification Authority of India to process payments for the online Aadhaar services. See guys, आपको बताने के इसमें से कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है UIDAI के साथ. So अगर हम बात करते हैं to process payment for the online Aadhaar services, the platform which has signed a partnership with UIDAI is basically Razorpay. और guys, अगर हम बात करते हैं UIDAI की, इसके फुल फॉर्म को याद रखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा अगर हम बात करें UIDAI की, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2016. सो गाइस, क्यों एस्टैब्लिश किया गया था इसे? सी, आप सभी के पास आधार नंबर होंगे, so that we can issue these Aadhaar, that is unique identification numbers, to the resident of India. The UIDAI was basically established in July 2016. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the next question, and the next question is from the important days, and the question here it is on the World Health Day 2023. So question आपके सामने ये है, you are required to tell me that what is the theme of the World Health Day 2023. See guys, World Health Day 2023, whenever there is a question on the important days, two things you are required to remember. First thing is the date on which that particular day is being observed, and the next thing is basically that what exactly is the theme. अगर हम बात करते हैं World Health Day 2023 की, it is observed on 7th of April every year. And when I talk about the theme, so theme for this year was health for all. That is the right answer to this particular question. Now the next question. So in accordance with the 2023 draft amendment, you are required to tell me that which one of the following ministries has been given the authority. See, कौन सी वो ministry है जिसको authority दी गई है so that they can establish a fact checking unit with the broad power to ascertain what is the fake or false or misleading in relation to any business of the union government. See guys, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसे सर्कुलेट होती है जो कि फॉल्स होती है इन टर्म्स ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की फैक्ट चेकिंग के लिए यहाँ पर ऐसी किसी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके, उसकी यहाँ पर अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है कौन सी मिनिस्ट्री को? द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर सर्कुलेट की जाती है दैट इज मिसलीडिंग, फेक और फॉल्स, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं दैट द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फैक्ट चेकिंग ऑफ सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज PIB. Absolutely, you have heard me right. That is Press Information Bureau. I hope this is clear. Now the next question. So Union Cabinet ने recently approved किया है project in which they are going to build an advanced gravitational wave detector and उसकी cost है 2600 crores. और आपके सामने question ये है कि कौन सी state के अंदर basically हम इसको establish करने वाले हैं. Is it आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र एंड असम? See guys, ऐसे जो भी यहाँ पर projects होते हैं और Union Cabinet जिनको approve करती है, तो वो कौन सी जगह पर establish करने वाले हैं, क्या उसकी cost रहेगी, कौन इसको
किसको बनाने वाला है, ऐसी सभी इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज महाराष्ट्र। सो गाइस बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, द प्रोजेक्ट नेम इज लीगो इंडिया, ठीक है। इसको बिल्ड करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस विल बी द थर्ड सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर द लीगो ऑब्जर्वेटरीज इन लुजियाना एंड वॉशिंगटन, ठीक है जी। तो इन दो की तरह ही ये वाली भी लीगो इंडिया, ये जो नया हमारा सिस्टम इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है, दिस पर्टिकुलर विल बी हैविंग द सेम स्पेसिफिकेशंस एज देम। एंड गाइस अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ एल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसकी जो आर्म है दैट विल बी ऑफ 4 किलोमीटर लॉन्ग। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस अगला क्वेश्चन है बेसिकली फ्रॉम अ स्कीम which has recently covered a certain number of years. The name of that particular scheme is प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना ने 2023 के अंदर कितने ईयर्स अपने कंप्लीट किए हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। तो इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है, you must remember that what exactly is the launch year for the scheme. See guys, launch year is one of the very important dimension when we are required to cover any scheme which is there under the sun. तो अगर हम बात करते हैं बाकी के dimensions की, so it can be about the nodal ministry, it can be about the beneficiaries, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, टाइप ऑफ द स्कीम क्या है, सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, तो ये सभी डिटेल्स आपको पता रहनी चाहिए। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, इट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 8 years एज इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2015। नाउ लेट्स कवर सम अदर डिटेल्स ऑफ द स्कीम। दैट इज इट वाज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर हम बात करते हैं कि इसको लॉन्च क्यों किया गया था, इट वाज लॉन्च to provide credit to those people who are still unfunded, and under this particular part guys, up to 10 lakh loan will be provided to the non-corporate, non-farm, small micro enterprises. This is a very important point from the exam point of view under this particular scheme. अगर हम बात करते हैं कि इस स्कीम के क्या क्या components हैं guys, it has 3 components, that is शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के अंदर 50,000 रुपीज तक का लोन मिलने वाला है, 50,000 से 5 lakhs तक का अंडर किशोर, एंड 5 lakhs से 10 lakhs तक का अंडर Tarun. There will be no processing fee, no collateral for this particular part, and guys repayment period की बात करें, it is extended up to 5 years. So these are the most important information that you must remember from this particular scheme. If you are very much clear to this particular scheme, please type yes in the comment section. Now let's move on to the next question guys, and here recently Sports Authority of India ने integrate किया है खेलो इंडिया गेम्स के सर्टिफिकेट को, और किसके साथ इंटीग्रेट किया है, that is what you are required to tell me in the comment section. Some of the platforms are being given, for example DigiLocker, UIDI जिसको हमने भी recently discuss किया है, then उमंग पोर्टल, mygov.in. So guys हम सभी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपना रखना है, so there is one very simple way in which you can keep your certificate in a digital form. And what exactly the name of that platform on which you can do that, that is DigiLocker. और इसी तरीके से जो भी लोग जिन्होंने यहाँ पर मेरिट सर्टिफिकेट जीते हैं इन द खेलो इंडिया गेम्स, तो वो अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर रख सकेंगे, उनको एक्सेस कर सकेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। एंड गाइस दैट इज व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज DigiLocker इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, here you are required to tell me the name of the Indian city which has been ranked 9th in the best public transport in the world 2023. See guys, ये जो लिस्ट है ये इसे निकाला है टाइम आउट ने, which is the publisher of the global city guides, और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है the city which is basically इंडिया की सिटी जो कि 19th नंबर पे थी इन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड हियर गाइस द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी इज मुंबई। और अगर हम बात करते हैं उन सिटीज की जो कि वर्ल्ड के अंदर टॉप पे है, दैट इज बर्लिन इन जर्मनी, प्रेग इन चेक रिपब्लिक, एंड टोक्यो इन जापान। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ दोस पर्टिकुलर सिटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस रुचिर कंबोज हैज हैंडेड ओवर द contribution of USD 2 million to the United Nations Trust Fund. And guys question आपके सामने ये है, ये जो basically fund provide किया गया है, it is basically in support of the African Union Transition Mission. अब ये जो मिशन है ये कौन सी जगह पर basically implement किया जा रहा है, that is what you are required to tell me in the comment section. Is it in Sudan, South Sudan, Somalia, Algeria or Libya? So these are the kind of questions which are being asked in the exam, and here guys the right answer is option C, that is Somalia is the right answer. Now the next question, here you are required to tell me the name of the organization जिसने announce किया है that it has won a UK government contract. किस चीज का contract?
the contract for providing spare and accessories for the Land Rover Wolf. And guys, Land Rover Wolf की बात करें, it is a kind of military vehicle. तो अगर हम बात करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, it is a TVS Supply Chain Solutions. That is option B is the right answer to this question. Next question is on the Time 100 Reader Poll 2023, जिसके अंदर शाहरुख खान ने, Indian actor Shahrukh Khan has topped this particular list, and you are required to tell me that what is exactly that which one of the following secured the second spot. See guys, let me tell you that it was basically being achieved by an Iranian woman. अगर हम बात करते हैं उन Iranian women की, so the woman was protesting for the greater freedom from the country's Islamic regime, that is of Iran. ठीक है, अगर हम बात करें guys इसकी, तो Mahsa Amini was the person who was detained by the morality police of Iran. ईरान की जो morality police है उन्होंने उसको detain किया था, and she was detained for not covering her hair properly, and that was the reason, and she was basically killed during that particular incident. And guys, that is why there were lot many protests, and this is the person basically who have won the Time 100 Reader Poll 2023. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the next question, and the next question you are required to tell me the name of that particular organization which has won the Best Production Process Development Award. तो अगर हम बात करते हैं इस award की, which is a part of the vaccine industry excellence, so ये particular award जीता है भारत बायोटेक ने. And guys, this particular was basically during the Congress which was held in Washington, USA. Next question. So the Extended Range Anti-Submarine Rocket, that is ERASR, which has been designed by two Pune facilities of the DRDO. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसकी जो सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग है ये नेवी के कौन से शिप से की गई है. इट वाज फ्रॉम द आईएनएस चेन्नई, मोर्मुगांव, राजपूत, सतपुरा और विक्रांत. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. एंड गाइस, हियर व्हेन आई टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर शिप, इट इज आईएनएस चेन्नई, फ्रॉम व्हिच द सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट वाज हेल्ड. Next question. So Prime Minister ने recently launch किया International Big Cat Alliance. See guys, let me tell you that recently 50 years of the Project Tiger were completed, and during that an international event took place in Mysuru, Karnataka. And इस दौरान यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस. और आपको ये बताना है कि ये जो अलायंस है बेसिकली इट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हाउ मेनी मेजर बिग कैट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो कितनी मेजर बिग कैट्स हैं जिनको ये कवर करने वाला है, जिनकी कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए ये अलायंस काम करने वाला है. सो द राइट आंसर फॉर दैट इज बेसिकली ऑप्शन ई, दैट इज 7. तो गाइस, अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली कौन सी वो 7 बिग कैट्स हैं जिनको ये कंजर्व और प्रोटेक्ट करने वाले हैं अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट, इट इज टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, jaguar and puma. So these are the 7 big cats which will be protected under the International Big Cat Alliance. Next question. So here please tell me the name of the state which has got the world's first conservation breeding center for the Asian kangaroo vulture. See guys, it is the world's first conservation center. That is why it is really very important, and I'm marking the star here from the exam point of view because it can be asked in the exam. And here guys, the right answer is Uttar Pradesh is the name of the state. Next question. So Ministry of Finance had established a panel to review the pension system for the government employees. और आपके सामने क्वेश्चन ये है गाइज, जब भी ऐसा कोई पैनल किसी मिनिस्ट्री द्वारा गठित किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो आपके सामने ये चीज़ें रहती हैं कि बेसिकली उसके मेंबर्स कितने रहेंगे और साथ में उस पैनल को हेड कौन करने वाला है. अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ members of this panel, so this is basically 4. And when I talk about the person who will be heading this panel, it is basically being headed by the finance secretary, that is T Somanathan. ठीक है जी. So this is the person who will be heading this particular panel which is going to review the pension system for the government employees. और इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है पैनल, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो इस तरीके से इंटररिलेट करके यू आर रिक्वायर्ड टू cover each and every dimension of this particular news. And if this is clear to all of you, please type yes in the comment section. Next question. So which of the following countries has become the second biggest jurisdiction for the FPI flow, that is foreign portfolio investment flows in India? So guys, recently data निकाला था NSDL ने, that is National Securities Depository Limited, और इसके according second biggest jurisdiction कौन सी है? Let me tell you, let me give you a small hint that the first
such jurisdiction is basically USA. और अगर हम बात करते हैं वो second biggest jurisdiction की, so it is basically option D, that is Singapore. Earlier I think it was Mauritius and now it is option D, that is Singapore. Next question is once again from the RBI monetary policy report, and the question is that credit growth continued to outpace the deposit growth in fiscal year 2023, और ये basically it is basically at a dash year high despite increase in the lending rates. तो lending rates के increase होने के बावजूद जो credit growth है इसने outpace किया है deposit growth को, and here you are required to tell me that कितने साल का ये जो record है ये जो नया create हुआ है, and here guys basically it is 11 year. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the next question. So Indian American statistician, the name of that particular person you are required to identify who has recently won the 2023 international prize in statistics, and guys the right answer to this particular part is option B, that is C.R. Rao is the right answer to this question. Next question. So here you are required to tell me the name of the nation or agency जिसने launch किया है OFAC 13 which is the reconnaissance satellite into the space. तो वो कौन सी country है या agency है जिसने इसको launch किया है? It is a very direct, that is option A, that is Israel. अगर हम बात करते हैं इसकी manufacturing की, so basically it is manufactured by state-owned Israel Aerospace Industries. Next question. MF Hydra, which is the world's first liquid hydrogen-powered ferry. So guys, these two words makes this question a very important question from the exam point of view because it is world's first liquid hydrogen-powered ferry, and you are required to tell me कि वो कौन सी country है जहां पर ये operational हुई है. Is it India, Japan, Denmark, Canada, or Norway? So guys, the country which is having this particular MF Hydra, it is basically option E, that is Norway. Next question. The unmanned aerial vehicle UAV जिसका नाम है Mirage 532, जिसकी capability है that it can fly at a height of at an altitude of 12,000 feet, and guys straight 3 hours के लिए ये basically fly कर सकता है. Unmanned aerial vehicle है, कौन सी country ने basically इसको launch किया है? That is what you are required to tell me in the comment section. So guys, जब भी ऐसी कोई अनोखी चीज यहाँ पर होती है, कोई ऐसा initiative होता है किसी country द्वारा, so these are the things that you must remember from the exam point of view, and here guys the right answer to this question is option C, that is Iran. Next question. So here you are required to tell me the name of the Indian Grandmaster who has recently won the World Chess Armageddon Asia and Oceania event. So guys, please tell me the name of that particular person who has won this particular part. यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक चीज और important रहती है, the person basically जिसको defeat किया गया in order to win this particular part. So basically it was the world rapid champion of Uzbekistan. ठीक है, जिसको डिफीट किया गया है. The name of that particular person is mentioned here, and when I talk about the name of the Indian Grandmaster who has won this award, it is basically D. Gukesh who has won this particular championship. Next question. So guys, here you are required to tell me the name of the person who has authored the book that is quoting India, England, Mughal India and the origins of empire. See guys, these are the questions from basically the authors and books. तो इसके अंदर आपको दो ही चीजें हैं, that is a dimension, one is the बुक का टाइटल क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज ऑथर, इस बुक को लिखा किसने है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज ऑथर्ड दिस पर्टिकुलर बुक मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नंदिनी दास. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे. सी गाइस, द क्वेश्चन इज ऑन द वर्ल्ड होम्योपैथी डे, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द डेट ऑन विच द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड every year. So guys, अगर हम बात करते हैं होम्योपैथी डे की, so basically it is celebrated to observe the birth anniversary of the father, that is the founder of homeopathy. The name of that particular person is Dr. Samuel हॉर्नमन. सी गाइस, ही इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी. ठीक है, तो अगर हम बात करें उस डेट की जिस डेट को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट पर्टिकुलर डे इज 10th of April every year. Next question is from the exercise scope India 2023, and you are required to tell me that कौन सी कंट्री के साथ इंडियन एयरफोर्स ने बेसिकली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है. सो बेसिकली इट वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड द एयरफोर्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड हियर गाइस, इट इज बेसिकली यूएस एयरफोर्स. Next question is on the State Energy Efficiency Index 2021-2022, जिसको recently release किया गया था, and you are required to identify the name of the state which is not in the front runner category, that is
the state which has scored more than 60 points in the state energy efficiency index 2021-2022. See guys, काफी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है. इसके अंदर कीवर्ड है द स्टेट विच इज नॉट इन द फ्रंट रनर कैटेगरी. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं इनमें से जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी के अंदर थी, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट विच वाज नॉट द पार्ट. एंड लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर स्टेट इज बेसिकली ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब. सो गाइज, अगर हम बात करते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की, सी हर एक स्टेट, सी वी ऑल नो दैट इंडिया भी यहाँ पर चाह रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी को हमें यहाँ पर इंक्रीज करना है. तो हर एक स्टेट कोई ना कोई मेजर, कोई ना कोई स्टेप ले रही है इन दैट पर्टिकुलर एम. ठीक है, तो उस एम को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें क्या प्रोग्रेस है, कितना प्रोग्रेस कर पा रही है स्टेट. टू असेस दैट पर्टिकुलर प्रोग्रेस, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 21-2022 was basically being developed, and guys, it was developed by Bureau of Energy Efficiency, and it was basically developed in association with AEEE. What exactly is this AEEE? It stands for Alliance for एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी. सो दीज आर द टू ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने मिलकर बेसिकली इसको यहाँ पर स्टार्ट किया है. सो अगर हम बात करते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी की, इट इज बेसिकली द स्टेट विच इज हैविंग मोर देन 60 पॉइंट्स, एंड देन वी हैव अचीवर्स कैटेगरी विच इज हैविंग द states which have scored 50 to 60 points. तो अगर हम बात करें अचीवर कैटेगरी की, there were 4 states only, that is असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब. और अगर हम बात करते हैं in the front runner category, so these are the name of the states who were there in the front runner category. I hope that these are the very important points and these are very much clear to all of you. Now let's move on to the next question. And guys, this is basically from the summary of the report. Recently NTCA ने, that is the National Tiger Conservation Authority, इन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज किया है. The name of that report is फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया. तो ये जो MEE स्कोर है इसके अंदर वो कौन सी टाइगर रिजर्व है जिसने की स्कोर किया है हाईएस्ट, दैट इज 94.38%. एंड विद दिस पर्टिकुलर स्कोर दैट पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व हैज टॉप्ड दिस पर्टिकुलर लिस्ट. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इज पेरियार टाइगर रिजर्व, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द स्टेट इन विच दिस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इज देयर. सी गाइस, लेट मी टेल यू that question can come on the any line from this current affair. तो current affair से related ही आजकल static questions को identify किया जाता है. Like we have developed a question here that, see, it was basically taught by Periyar Tiger Reserve, but what is the name of the state in which this particular reserve is located? So exam के अंदर इस तरीके से questions आने लगे हैं, and the name of that particular state is basically Kerala. So guys, these are the things, and that's how you are really required to cover these kind of current affairs. Now the next question. So according to the data that the MOSP, that is Ministry of Statistics and Program Implementation, presented in the Parliament, you are required to tell me the name of the state which has made the best use of amplified fund in fiscal year 23. Let me tell you guys कि recently Government of India ने MP-led स्कीम की नई गाइडलाइंस भी, रिवाइज्ड गाइडलाइंस लॉन्च की है, एंड दीज गाइडलाइंस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April 2023. तो ये गाइडलाइंस भी आप पढ़ना मत भूलिएगा. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेट व्हिच हैज टॉप्ड दिस पर्टिकुलर, व्हिच हैज मेड द बेस्ट यूज ऑफ दीस फंड्स, इट वाज ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो the directive to set up the panel to examine the disability pension came from the Department of Military Affairs. See guys, this particular news is basically related to the Department of Military Affairs, जिन्होंने यहाँ पर पैनल सेटअप किया है to examine the disability pension. तो ये जो डायरेक्टिव है ये कौन से यहाँ पर कहां से आया है? इट हैज कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. तो इसको हेड कौन करता है? क्वेश्चन इस लाइन पर पूछा गया है. सी गाइस, यू कैन सी दैट हाउ द लाइंस ऑफ द क्वेश्चन कैन बी चेंज डिपेंडिंग अपॉन द करंट अफेयर. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द authority which is basically heading this Department of Military Affairs, it is option E, that is Chief of Defense Staff. I hope this is clear to all of you. And here guys, the next question is, recently one of the agriculture universities has been notified as the Center of the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority, and you are required to tell me that which state's agriculture university is this basically जिसको यहाँ पर notify किया गया है as the Center of the Protection of Plant Varieties. And the right answer is option A, that is Kerala. And guys, when I talk about the objective of this particular notification, it is to protect the rights of the Kerala farming communities over the traditional plant varieties. Next question. So NSE Indices Limited, which is a subsidiary of NSE, has launched India's first Nifty REIT InvIT Index. So guys, काफी easy question है. सी आप देख सकते हो, question ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर
दैट कौन सा वो स्टॉक एक्सचेंज है जिसने की लॉन्च किया है ऐसा पहला इंडिया का निफ्टी रीट एंड इनविट इंडेक्स? तो राइट आंसर विल बी द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पर क्वेश्चन एक और बन सकता है आपका कि जो REIT है कि उसकी फुल फॉर्म है क्या? सो REIT बेसिकली स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो बेसिकली guys, when I talk about this is the investment vehicle that own revenue generating real estate or infrastructure assets. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the next question, and here you are required to tell me the name of the bank or the organization which has proposed to subscribe non-convertible debentures worth rupees 150 crore of the Tata Power Delhi Distribution Limited, and the aim of this particular proposal is to enhance the Delhi's power distribution through grid enhancements. So when I talk about the name of that particular bank or organization, it is Asian Development Bank. Asian Development Bank का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और साथ में उसके प्रेसिडेंट कौन है, जो हेड है उस पर्टिकुलर बैंक के वो कौन है, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर टू क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हियर गाइस यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द एंटिटी व्हिच हैज पार्टनर्ड टू को-फाइनेंस $125 million for the IndusInd Bank for offering for on lending to the agriculture sector. So what is the name of those particular entities? The name of those particular entities is JICA and Citibank. So JICA and Citibank is the right answer. I hope that this is clear to all of you guys. And now let's move on to the next question. So here you are required to tell me the name of the institute जिसका technology business incubator, that is the startup incubation innovation center, जिसने साइन किया है CSR agreement with the Advanced Weapon and Equipment India Limited. So what is the name of that particular institute जिसके इस incubator ने ये CSR agreement साइन किया है? The right answer is IIT Kanpur. Next question. So UIDAI and which one of the following has joined hands in order to develop a robust touchless biometric capture system for easier usage by the people anytime anywhere? तो आपको यहाँ पर बताना है कि दो यहाँ पर एंटिटीज हैं जिन्होंने मिलकर ये बेसिकली डेवलपमेंट करने की सोची है, that they are going to develop a robust touchless biometric capture system. So one entity is UIDAI. What is the name of the next entity? So the name of that particular entity is option D, that is IIT Bombay. Next question. So you are required to tell me the name of the bank or authority or organization which has launched its coffee table book The Banker to the Every Indian. So guys, The Banker to Every Indian कौन से बैंक ने लॉन्च किया है इस कॉफी टेबल बुक को? The right answer is option A, that is State Bank of India. Next question. So National Safe Motherhood Day. See guys, a very easier line this question is, you are just required to tell me the day on which we celebrate this National Safe Motherhood Day, and that particular date is 11th of April, and this day is being celebrated to promote the maternal health and reduce maternal mortality rates in the country. This is very much clear to all of you. Now let's move on to the next question. So here guys, you are required to tell me the name of the state जिसके state product है, that is गोंद पेंटिंग एंड शरबती वीट. तो guys, शरबती वीट एक काफी फेमस यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि क्रॉप है, और आपको मुझे ये बताना है कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर विच दे हैव गॉट द GI टैग, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश. So here guys, let's move on to the next question, and the next question is from the world's most criminal countries ranking, और यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है in the recently released world's most criminal countries. अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट की, तो बेसिकली वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस लिस्ट को लॉन्च किया है. टॉप पर अगर हम बात करें तो इट वाज वेनेजुएला विच वाज ऑन द टॉप, विच वाज फॉलोड बाय पपुआ न्यू गिनिया ऑन द सेकंड पोजीशन एंड अफगानिस्तान ऑन द थर्ड position. इंडिया की बात करते हैं, इंडिया was on the 77th spot in this particular list. Now the next question. So Union Minister of Education ने recently unveiled किया है digital version of the employability skill curriculum for the students who are enrolled in India's ITIs. तो इंडिया के ITIs के अंदर जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं उनके लिए डिजिटल वर्जन लॉन्च किया है for the employability skills curriculum at the Future Skill Forum in New Delhi. And the question is not on this particular curriculum guys, the question is on this particular forum जहां पर इसको बेसिकली अनवील किया गया है, दैट इज अ फ्यूचर स्किल्स फॉरम. और आपको ये बताना है कि जो फ्यूचर स्किल फॉरम है ये बेसिकली किसका इनिशिएटिव है. यहां पर नाम दिया गया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, एंड गाइस हियर ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर दिस इनिशिएटिव ऑफ फ्यूचर स्किल फॉरम, दैट इज Quest Alliance, Accenture, Cisco and JP Morgan. Now the next question guys, अंडमान निकोबार कमांड ने कंडक्ट की है लार्जेस्ट स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. आपको नाम बताना इस एक्सरसाइज का, which basically involves the assets of आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द कोस्ट गार्ड. क्या है उस एक्सरसाइज का नाम?
The right answer to that particular exercise is, the name of that particular exercise is option B, that is exercise Kavach. Now the next question guys. So Ministry of Textiles ने announce किया है launch of 2 quality control orders for 31 items, and this comprises of some geotextiles and this comprises of some protective textiles in phase 1. Geotextiles की बात करें, it is used for the environmental applications, और अगर हम बात करते हैं protective textiles की, it is basically used for the humans. So guys, अगर हम बात करते हैं कि कितने वो उसके अंदर नंबर हैं, that is basically 19 geotextiles and 12 protective textiles in phase 1. तो आप देख सकते हो कि protective textiles are used to protect human life from the hazardous and adverse working conditions. Now the next question. अगला question is from the IMF की biannual report. The name of that particular report is World Economic Outlook 2023, and guys the title of this particular book is A Rocky Recovery. तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फिस्कल ईयर 24. सी गाइस, ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट्स हैं, ये आपको जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ना बेहद जरूरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एग्जाम एकदम रिसेंट है तो इनको पढ़कर जाइए. अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो उस टाइम पर जो लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आपके सामने अवेलेबल रहेगा उसको पढ़िएगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, इट इज ऑप्शन ई, दैट इज 5.9%. Now the next question guys. The BHEL led consortium backs rupees 9600 crore order, and what exactly is the order? The order is of supplying 80 sleeper class Vande Bharat trains. तो आपको सामने ये जो क्वेश्चन है, the question is which one of the following is a technology partner in this consortium. ये जो consortium है which will be led by the Bharat Heavy Electronics Limited, तो इसको basically यहाँ पर partner कौन करने वाला है? The name of that particular consortium is Titagarh Wagon Limited, which is the partner in this particular consortium for the BHEL Limited. Now guys, we are on the last question of our today's session, and the question is from a very easier topic, that is of the important days. और यहाँ पर once again you are required to tell me the date of this particular day on which the International Day of Human Space Flight is being observed. I want all of you to answer this question in the comment section. And here guys, when I talk about the date on which it is being celebrated on the that is the International Day of Human Space Flight, it is option B, that is 12th of April. So guys, I hope that this is clear to all of you, and now this is the time that you should be telling me your scores out of 50, because scores are really very important to analyze that what your weak areas are and what exactly are your strong areas. तो अपने weak areas को strong areas में convert करना है. How? By focusing more on these weak areas, by giving more focus, more time to these weak areas, so that in the exam, when the exam will come, you don't have any kind of weak area. I hope this is clear to all of you. And guys, if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. And you can also join our Telegram channel to access the PDF of these particular sessions that we take on the YouTube. So guys, I hope that this session was really very useful and fruitful to all of you. If you have liked the session, please give a thumbs up in the comment section, and you can also post your other feedback as well. And apart from that, if you have any queries in this particular session, you can also post those queries in the comment section, and also you can also share your queries on hello@edutab.co.in, and you can also call us at 814-620-7241. So guys, thank you for joining us. Wish you all happy learning.